we have done? Tell me. We have done how to create a synonym, Jivya, in the last session. We have done how to, create the smartness in your phrases. Smata Madam, you got it? We have done. Yeah, the last session we have done. Smata Madam. सर हमने उसमें vocab किया था Yes. और phrases किए थे. Yes. Sense of the language kiya tha. Now, for हाँ example, जी. if I'm saying, don't cross the bridge in English. Now, for example, I'm showing my blunt nature in front of my friend, in front of my anyone. So you say, hello, listen to me. Don't cross your line. Now, don't cross the line is what? Am I crossing the line? Am I crossing the border? No. Limit. Yes. So this is the sense of the language which we are working for. Same in French also. So repeat after me, team. Les démarches. Let me write it down. Good evening, Les, sir. good evening. Good evening. Les démarches. Repeat after me, team. All of you, please. Les. Démarche. Now you will come to know a lot of vocabularies. Les démarches. Démarche basically we use for steps. Démarche. Repeat after me. Les démarches. Les démarches. Yes. Basically, they see we have a lot of things. We have étape. Repeat after me. Étape. So basically, this étape. E we have a thank you team. Étape. Étape is your steps. Étape is your steps. Les démarches is your steps. Les démarches. Repeat after me, team. You know, if you use proceedings, ये बहुत important है टेस्ट के लिए. You say the proceedings, proceed, les démarches, les démarches. Is it clear to you, my team? All of you speak after me. Étape. Repeat after me. Étape. Étape is your basically we have steps. Les étapes. Les étapes we have the steps. Les étapes. If I asked you team, because how you can because in DEF we have to go for the arguments, we have to go for the convincing to someone. So the little pattern is mixing in DEF, right? So over here, I'm working for the vocab part. Now how we can understand les étapes, the steps. If I will say, what is the synonym of les étapes? You will say démarcher. It means les démarches. Is it clear to you, team? Yes, sir. One thing we Yes, sir. toute évidence. Use it out. Répétez après moi, toute. Repeat after me, toute. Toute évidence. Now, to repeat after me, we have all. Basically, toute évidence. Okay. Now, team, we work for obviously. What to say obviously in French? Tell me. हमने किया था bien sûr. Évidemment. Évidemment. Clear. Now, one thing we have tout à fait. Have you done tout à fait? Yes. Akriti ma'am, is it clear to you? Yes, sir. Harpreet ma'am, is it clear Yes, to sir. you? Yes, sir. Tout à fait. What is tout à fait? Absolutely. Absolutely. Totally. Totally. Absolutely. tout à fait. अच्छा एक मेरे सेशन है मैंने शायद आपको भेजा भी था वो सेशन आपको देखना है अगर आपने नहीं देखा तो वो देखना है आपको बहुत इम्पोर्टेंट आपने कल भेजा था सर शायद को. यस क्लियर सो उसको देखने टूथ एविडेंस नाउ एविडेंस वी हैव एविडेंस evidence we have evidence but tooth evidence basically we work for obviously now if I asked you evidence we have evidence right so what is the synonym of evidence repeat after me témoignage repeat after me témoignage
Repeat after me. Témoignage. Témoignage, basically we have very important. See, evidence. Evidence is what? Evidence, test, evidence, right? So what is the synonym of evidence? See, how I can speak French, you tell me. How I can create the line in French, how I can create the argument in French, how I can create the synonym in French. The moment I have a beautiful vocab list, the moment I have the beautiful French knowledge, so this is the program where you will come to know the knowledge in French. So repeat after me, témoignage. Repeat after me. Repeat after prof. Repeat after me, prof. Proud. Is basically testing, test, prof. Is it clear? Yes. Prof. Repeat after me, prof. So what is the meaning of prof? Prof is test, testing, prof. So we have synonym. If I will say tout evidence, if I will say everything is clear in this evidence, it means you testing somewhere. Tell me, team. Understand the concept, because it's very important concept. Like we are working for the sense of the language. Say what the sons est son de la langage. This is the sense of the language, right? So for example, as I asked you, hello, don't cross the border, don't cross the line, don't cross the bridge. It means what? You're stopping someone to be in your limit, right? If I ask you tout evidence, what is tout evidence? Everything is in the all evidence, but all evidence we have témoignage. Repeat after me. Témoignage. Clear. Proof. Is it? Proud. Testing. Repeat after me. Proof. Proud. Proof. Habituellement. Repeat after me. Habituellement. Repeat after me. Habituellement. 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 Habituellement is basically we use for, you know, used to, your habit. Habituellement. Repeat after me. Habituellement. Repeat after me. Now if I asked you, Harpit ma'am, Yes. what is the synonym of habituellement? I can say habitude. I can say habitude. Okay. Généralement, generally. Generally, I used to do like that. Generally. So repeat after me. Généralement. Repeat after me. Généralement. Habituellement. Ordinairement. Repeat after me. Ordinairement. With these type of techniques, this is a very important technique for TEF to overlap your barriers in terms of your speaking, writing, because in writing you have to use this ordinairement, d'habitude, généralement, habituellement. Is it clear to you, team? So, but before applying these things, we have to understand these vocabularies. So repeat after me. Généralement. Habituellement. Habituellement. Ordinairement. D'habitude. Habitude. Is it clear to you, team? Oui, monsieur. Clear? Now, for example, if I will say appuyer, very important. Let me write it down. You know, Harpreet, what is appuyer? To support. Yes. Now, if I ask to you, all of you, appuyer, appuyer, we have soutenir. Repeat after me. Soutenir. Repeat after me, team. Soutenir. Soutenir is my verb to appuyer is my verb to support. So now let's work for support phrases, so support synonyms. Now repeat after me. Appuyer, soutenir, aider, supporter, encourager, souvenir. Repeat after me. Soutenir, appuyer, Repeat aider, after moi. supporter, Yes. encourager, Yes. soutenir. Tell me one thing.
If I'm supporting someone in some extent that you have to work hard, I will support you, the things will get settled. It means you are pushing someone because we are working for the sense of the language. It means I'm pushing someone to do something. So repeat after me. Apuye Appuyer. presse. Repeat after me. Press. Appuyer, Presse. presse, Pousse. Now pousse basically a verb to push. Pousse. Literally meaning of pousse is to push. So repeat after appuyer. Repeat after appuyer, Appuyer. presse, presse. presse, Pousse. assiste, Insiste. assiste, faire, Pression. Pressão. pression. Passe. Passe basically we use for weightage. Is it clear to you? Clear, team? Repeat after me. To weigh, to weightage, to importance. Is it clear to my team? So Yes. repeat after me, team. All of you. Soutenir. Soutenir. soutenir, All of you, please. Soutenir. Soutenir, Appuyer. appuyer, Aider. aider, Supporter. supporter, Supporter. Encourager. Encourager. Venir. Subvenir. Appuyer. Appuyer. Presser. Presser. Pousser. Pousser. Insister. Insister. Faire pression. Faire pression. pression, Passer. Passer. Now repeat after me. Réfléchir. Repeat after me, team. Réfléchir. Now, for example, you're thinking something. Now, for example, there's arguments going on because obviously you have to work for the arguments. Because in your TEF letter writing, you have to apply 3 arguments, right? But how you can apply? If you say, yes, I think we have to deep think. We have to dive deeper in this. So repeat after me. Réfléchir. See, why we are working for these things? Why working with synonyms? Why we are working with sense of the language? Because until and unless you're not aware of these things, you cannot make these things. In order to make the arguments, to make the phrases, to make the paragraph, at least you have something with the vocabularies. Is it clear to your team? Like we have done hold. So we have done a lot of synonym for hold in the last session. Tell me. Have we done? Can anyone tell me the 5 synonym of hold? paneer, Saisir. Détenir. Saisir. Very good. Saisir, okay. Mettre la main. rafler, Rafler, very good. Okay. Next. agripper, Agripper, c'est Agripper. très bien. Agripper, okay. mettre la main, Mettre la main, excellent. Very good. Excellent. So that how the language, we work for the language. Clear? Réfléchir. Repeat after me. Réfléchir. réfléchir, Considérer. considérer, Essayer. essayer, Ruminer. Very important. ruminer, How you will come to know? Now, for example, you're doing reading part. And there's a vocab of ruminer. So how I will come to know? So repeat after me. Réfléchir. Réfléchir. Repeat after me, s'il vous plaît. Have we done with this? Okay. Repeat after me. Réfléchir. 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 Repeat after me. Considérer. Now we have, Considérer. essayer, basically, we have verb ruminer. So Ruminer. ruminer is my verb to, to reflect, to deep think. Whenever you, now for example, there's a problem. Obviously, team, listen to me very carefully. The concept is very important. In your letter writing, in 99% you have to speak, you have to write for, some problem.
Now, for example, uh, deshe, environment, right? Réseau social. And you'll say, I think we have to Deep think about deep that. think. We have to dive deeper in this to overcome from overcome from this problem. Kuch bhi. We have to make some best steps. So what vocab I will use, team? You tell me. I can use rumine, because the moment I will apply these type of vocabularies, because these the vocabulary which belongs to your C1 pattern, B2 plus pattern. So rumine is my very important vocab to deep think. Chintan karna in Hindi we have. So for this reason we are doing these type of things. At least जब हम उस पैटर्न पे जाएं तो आपके पास ये vocab तैयार हो. Is it clear to you, team? Yes. Is it clear to you, Jivya? We. Claire? So now repeat and इस vocab को अब what we have decided, tell me in the last session what we have decided. In the last session we have decided at least this is your oath. Yes, that you have to learn 50 vocab which I will give it to you related to your TEF only. So then next 7 days you will have 400 vocab in your hand. And these 400 vocab once will fix in your mind, the game would be yours. Is it clear to your team? So repeat after me, team. Reflexir. Reflection. Réfléchir. Considérer. Concentrate. Say. Passe. Rester. Rumine. Ruminate. Meditate यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे. That's a meditate. Okay. So repeat after me. Generalement, appuyer. Can you speak? Généralement. Généralement, appuyer. Ordinairement. D'aptitude. Ordinairement. Appuyer. Presser. Fesser. Pousser. Pousser. Insister. Faire pression. Ah, very good. Passer. Now repeat after me. Dégager. Yes. Very beautiful pattern for TEF. Dégager. Basically, dégager is to clear out, clear cut. Dégager. You know, Dégager. अब clear की बहुत सारी meaning है हमारे. Clear the exam, clear cut, clear the statement, right? So dégager is to clear cut. Dégager. Repeat after me. Dégager. Dégager. Dégager is basically we have to clear. Dégager le problème. Soulever le problème. Soulever. Repeat after me. Write it down for you. Dégager. Dégager. Soulever. Team Soulever. these. Now, for example, if I want to highlight some problem, clear the problem. Soulever is to soulever. Repeat after me, team. Soulever. Yes. Now, dégager is to clear cut. Soulever is to raise the problem, to clear, to raise out. Soulever, dégager. Is it clear to my team? सर ये जो सूलीने होता है Souline also we can apply over here. Who said? वो इसका सिनोनिम ही हुआ. I said आकृति. Yes, ma'am. Souline. Because souline basically we have worked to highlight. Ab souline we can say soulever to raise. Dégager. I can use this in the sense of synonym. Right? Dégager, soulever, souligner. Is it clear to you? Yes. Is it clear to you? I can say elevate. Elevate is my verb to again to uplift. Elevate. So repeat after me, team. We are working for synonyms. Acha, team, you tell me, is this pattern, what you think? Is this pattern really help you out in if you have 400 vocab in your hand wherein you have a lot of synonyms you can apply? Because in French, basically, we cannot go for a repetition of the words. That's a rule. I should not go for a repetition. It means what Judy will think. She will think he's only using one vocab. It means not aware of the next synonym, right? So what do you think? If you we are like the last session we have done already,
And the same session which we are doing right now, what do you think from these sessions? सर इनके कॉन्जुगेशन भी करने पड़ेंगे? इनके ना ये ऐसे वर्ब्स हैं बेसिकली, ये हमारे ना फुल वर्ब यूज होते हैं, जैसे आफे द सुलेवे, आफे द सुलीने। अगर करना भी पड़े तो ईयर एंडिंग वर्ब का ईयर एंडिंग वर्ब का फॉर्मूला क्या है? ई एस ई Yes. सिंपल। यस सर। Is it clear to you? So what do you think, Sonta Madam? Is this really important in this pattern? Like if you know 400 to 500 synonyms, and on the basis of this, you know the phrases, like where we can say sutni, rapuye, ede, support. Now, for example, if I asked you, I think we have to support someone. In order to support someone, we can eradicate this problem. Yes, I think government should take some steps to support the people. I use 3 terms for support to make a sentence, right? And if you're using same sutanir, no, I can use sutanir, apuye, supporte, suvanir. Is it clear to your team? सर एक चीज और पूछनी थी, क्या लैंग्वेज में ऐसा भी होता है कि हम नेगेटिव सेंस या पॉजिटिव सेंस भी रहता है? हाँ बिल्कुल रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दो मेरे को आप अपनी हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज का। जैसे सर एनहांस वर्ड हम यूज करते हैं इंग्लिश में, तो वो हम पॉजिटिव उसके लिए ही कर सकते हैं, नेगेटिविटी में हम एनहांस नहीं यूज करते। ओके, अब मैं ये बोल सकता हूँ दिस प्रॉब्लम। अब चलो मैंने एनहेंस की बात करते हैं, चलो ठीक है। Who was it? हरविंदर? यस सर। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फ्रेंच में इसको यूज करता हूँ कि दिस प्रॉब्लम, ये तो प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू इंक्रीज एंड इंक्रीज एंड इंक्रीज। सो इसका हमने किया था सिनोनिम। अब हम सी एनहेंसमेंट इज समथिंग, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये एक बहुत इंटरनेट बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, आई कैन से ऑगमेंटेशन। बट अगर वो प्रॉब्लम में भी अगर मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ कि क्यों एनहेंस हो रही है प्रॉब्लम, why it is enhancing, okay, why it is increasing. So how we can apply the things in French? So I can say mal en pire, I can say sub problem, repeat after me, sub problem, repeat, sub problem se tient en tête de liste. It means what? This problem is become like the head of the list. Sub problem se tient en tête de liste. Sub problem, repeat after me team, sub problem repeat after me, sub problem, repeat after me. सबसे पहले tête de liste वाला इसको बोलो टीम प्लीज। सब प्रॉब्लम Sub problem, or that the list. yes, it means this problem is become like the head of the list. Sub problem A, devenu. Devenu basically we have verb for devenir. Devenir is my verb for to become, devenir. So I can say this problem became worst and worst and worst. मतलब मैं कहीं यही बोल रहा हूँ ना, एनहेंसमेंट को मैं अगर मैं लेके जाऊँ नेगेटिविटी की ओर, तो यही बोल रहा हूँ कि एक वर्स्ट प्रॉब्लम बनती जा रही है। टेल मी। यस So sub problem A, devenu mal en pire, dans cette année récente, dans cette année récente, in this recent years, dans cette année, in this recent years. Is it clear to you, Harpreet ma'am? We already have done these several templates, right? यस सर वी हैव डन। So I don't think so कि अब आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि ये तो ग्रैब हो गया, इसमें कोई इशू नहीं है। यही पर तो जब हम 3 आर्गुमेंट्स के बिना सर ये वो 3 आर्गुमेंट्स को नहीं रिप्लेस कर पाएंगे ना, ये तो हम बीच में स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो हमें आर्गुमेंट में लिखना पड़ेगा ना। आर्ग्यूमेंट्स में तो आपको 2-2 लाइनें ही तो क्रिएट करनी है। तो वही आपके मुश्किल है। पास
वही 2 लाइनें तो क्रिएट करनी है। वो कब होगा जब आपस ये जो हम कर रहे हैं बैक टू बैक। क्लियर। अब जैसे लास्ट टाइम हमने एनवायरनमेंट पे किया था, एनवायरनमेंट में कितने सारे आर्गुमेंट, वो सारे आर्गुमेंट थे, ना तो उसमें कोई लेटर का स्टार्टिंग था ना उसमें कोई लेटर का एंडिंग था, उसमें सारे आर्गुमेंट थे। हमारे 250 से भी काफी एक्सीड कर जाएगा ना, जैसे हमारी स्टार्टिंग है फिर हमारा कंक्लूजन है। Right, so a lot of content, it's just you have to segregate your content. हमने लास्ट टाइम एनवायरनमेंट के ऊपर किया था, एटलीस्ट यू हैव 20-25 lines I think we have done for environment, and the same you can apply in deshe, right? Clear. अभी मैंने आपको एक पैंडेमिक का करवाना है, एक टॉपिक पैंडेमिक का, राइट? जो अभी पैंडेमिक का हम करेंगे, you will get again lot of arguments. Right. Clear, you're getting a content. उसको प्रैक्टिस करना है। अभी जो मेरा सेशन जो मैंने अभी अपलोड किया था अभी yesterday, उसको आप देखना, because see why working for this, de marche les étapes tout à fait témoignage। अब témoignage क्या टेस्टिंग है? आप बोलो अगर इसमें कि ये एक टेस्टिंग चल रही है, बट आई डोंट नो व्हाट, ये टेस्टिंग कब खत्म होगी। अब टेस्टिंग चल रही है, टेस्टिंग कब खत्म होगी? तो 2 बार टेस्टिंग आया है, राइट? सो आई कैन से témoignage and I can say proof. Is it clear to you? I can say toute évidence. Clear. So that's why we are working for this. Clear, all of you team? सर तो जैसे कोविड का टेस्ट कराते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे यही प्रव यूज होगा? देखो उसमें नहीं, ना 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 कुछ मेडिकल टर्म का होगा हाँ, उसमें, मेडिकल कुछ टर्म्स vocab, का, हाँ मैं वही। जैसे इंग्लिश की मेडिकल टर्म की vocab अलग होती है ना। देखो क्या होता है बेसिकली, उसको हम सिंपल वन टेस्ट द कोविड, फ्रेंच में ऐसे बोलते हैं टेस्ट द कोविड। ए प्रूफ द कोविड नो, témoignage तो एक वो डिस्कवरी हो गई ना, टेस्टिंग। हम जो बोलते टेस्ट द कोविड। क्लियर? इज इट क्लियर टू यू टीम? सर हम ऐसे वो कैब ना करें जैसे कि जैसे पेंडेमिक का हो गया तो एक तो एरिया हमारा मेडिकल का हो गया, थोड़ा सा से हम लिख पाए उनके डॉक्टर्स के को क्या बोलेंगे बट हम, पैटर्न तो नहीं है ना वो टेफ का। देखो क्या है, जैसे आप कह रहे हैं ना पेंडेमिक पे आ सकता है, Pandemic पे जब- एनवायरनमेंट पे आ सकता है। एनवायरनमेंट पे अभी आपको नहीं करवाया मैंने, अदर्स को एनवायरनमेंट, हमने कुछ काम किया एनवायरनमेंट पे, राइट? अब पेंडेमिक का जब अब जैसे पेंडेमिक जो मैंने करवाना है, तो अच्छा कि मेडिकल टर्म से क्या बात करोगे? अब हमारी जो मेडिकल लाइंस होती हैं, क्लियर? अब मेडिकामो, मालाद, क्लियर, मालादीस, क्लियर। लेकिन कहीं ना कहीं तो ये प्रॉब्लम होगी ना, ये प्रॉब्लम रेज हो रही है, तो क्या बोलोगे आप? सोता मदाम कि प्रॉब्लम रेज हो रही है, क्या बोलोगे आप? टेल मी इन फ्रेंच। प्रॉब्लम, हाँ, सुलवे, सुलवे, क्लियर, ये प्रॉब्लम बहुत हाईलाइट हो रही है, हाईलाइट हो रही है, ऑन लवे इंक्रीज हो रही है, तभी तो हम ये चीजें कर रहे हैं। ये जो पैटर्न हम कर रहे हैं, इट इज नॉट डिजाइन्ड बाय मी, दिस इज डिजाइन्ड बाय द एक्सपर्ट्स। जो हम पैटर्न कर रहे हैं, राइट? अब जैसे आप बोलो जनरली ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो व्हाट यू विल से, बोलोगे ना इंग्लिश में, दिस प्रॉब्लम जनरली, दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू इंक्रीज, जेनेरालमो, क्लियर, सब प्रॉब्लम अब ये बढ़ती जाए, सब प्रॉब्लम augmente jour par jour, increasing day by day, और हमने jour par jour, the plus on plus भी हमने किया है, the mois en mois, gradually ये और बढ़ती जा रही है। So क्या बोलोगे? On the year. Yes, the mois en mois, I can say the no jour on peut observer का किया था हमने, into the age one can observe that. Have you done with this? Yes. The no jour on peut observer que la COVID, I can say for example COVID, right? Le maladie, the COVID, the disease of this COVID. Le maladies, la maladie, c'est la malade. Malade, we have sick. Sick, so I can say the no sure on peut observer que ce problème est devenu mal en pis dans les années récentes, et ce problème augmente jour par jour, petit en petit, slowly and slowly, and we have done with this. तो कहाँ चाहिए मेडिकल टर्म्स? क्या है इसमें? मेडिकामो ही तो है, और क्या चाहिए? इंजेक्शन होना चाहिए हमें,
राइट? मतलब यहाँ पे ये जैसे कोई रेडिकेट हो रहा है या इरेडिकेट हमने एलिमिनेट हो रहा है। टेल मी द वोकैब ऑफ इरेडिकेट, टेल मी। किया था हमने सुप्री में, रिमेंबर? इरादी सुप्रीम is my verb to delete, eradicate, redweed is to reduce. Have you done with this? Tell me yes or no. So repeat after me. Supreme. All of you repeat after me. Supreme, eradicate, eradicate, redweed. Jeve, is it clear to you? Yes. So repeat after me, all of you, please. Supreme, eradicate, Eradicate. redweed. रेडवीर। Clear हो रहा है आपको? So now how many vocab you have? If you will say, Smanta Madam, we have to go for the preventive measures. What is preventive measures? हमने किया था. Tell me, Jivya, preventive measures. Preventing measures. We have to take some. तो मेजूरे, मेजूरे, Yes, mesure. Exactement. On peut prendre les mesures. Is it clear to you? Have you done with this, right? I'm sorry, sir. I am not, aware of this. Measure हमने किया था. Jivya ने पूछा भी था, what is mesura? Mesure. Yes, sir. Mesure is to Measure. measure. It is a measure, some line we are measuring. Mesure. Right? चलो मेरे साथ repeat करो आप. Le démarcher. All of you repeat. Les démarches. Abhi, is it clear to you? Abhi, is it clear to you? Les démarcher. Les Les étapes. marches. Repeat Les after me. étapes. Les étapes. Les étapes. Repeat after me. Les étapes. Les démarcher. Démarches. Tout évidence. Tout Repeat after me. évident. Tout à fait. Tout fait. Tout à fait. Témoignage. Témoignage. Réfléchir. 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 Considérer. 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 Penser. Penser. Ruminer. 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 Faire. Habituellement. Habituel. Généralement. Général. Ordinairement. Ordinairement. Here. D'habitude. D'habitude. Repeat after me. D'habitude. D'habitude. Appuyer. Appuyer. Presser. 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 Pousser. Pousser. Insister. Insister. Faire pression. Faire pression. Ce problème est devenu mal en pire. Repeat after me. Ce problème is this Problem is Yes, it means this problem is become. Ce problème est devenu mal en we have worse and worse and worst in this recent years. Dans cette année récente. Repeat after me. Soulever, soulever, dégager. Repeat after me. Dégager. Soulever. Dégager. Soulever. Dégager. 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 अच्छा team, one thing I want to add over here. देखो एक ना मेरा verb है falloir, very important, बहुत important pattern है falloir. Basically falloir is my full verb to must. falloir में सिर्फ हम एक ही ना तो falloir में j यूज होता है ना tu यूज होता है टीम, ना होगा ना वो यूज होगा. Yes, that's the reality of this verb. In falloir we cannot use je, no, tu, no, ni
falloir will only conjugate with ill conjugation. Clear, team? Clear? Yes, sir. Yes. Falloir is, that's a rule of this verb. I can say falloir will conjugate with ill for in present tense. Bolo, ill for it, whenever you say na, it is mandate, it is must. So I can say ill for. Bolo team. Ilfo. Ilfo. मैं बोलूंगी it had to must. पास्ट की बात करूंगा तो बोलो इला फालू. बोलो टीम. Ila falu. इला फालू. बोलो टीम. इला फालू. Ila falu. बोलो टीम. In fourth ray, if I'm talking for the, there will be must. Is it clear to you, team? So I can use for futures il faudrait conditional. So repeat after me. Il faut. Repeat after me, team. Il faut. Ilfo. टीम ये यूज करना है आपको. फालवर वर्ब को यूज करना ही करना होता है आपको टेफ में. वेरी इंपॉर्टेंट. सर ये वही वाली है वर्ब जो सीजन्स के लिए यूज होती है, इल फॉर, थ्रशो वाली. नहीं नहीं, वो तो फेयर वर्ब है. अच्छा वो ठीक है. That's तो a- ये जो सेकंड वाला है इल इला, आ फालू, that's a past. इसमें हाँ ये पास्ट के लिए है, तो इसमें अवार का हुआ है Yes. जो हम है Avar and pepe falu. पे हम्म. ओके. Okay. And il faudrait. Repeat after me. इल Il faudrait. Is it clear to you, team? Fodra. Yes. Repeat after me, team. से reply. इसको repeat करो, Jivya. Repeat it, please. Ilfo. Uh-huh. Ila falu. Uh-huh. Ilfodra. Now we have one word, contenir. Contenir को मैं बहुत यूज करता हूँ टीम. Repeat the vocab, contenir. Repeat after me, contenir. देखो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं टीम, listen to me. हम डायरेक्टली टेफ की vocab पे काम कर रहे हैं यहाँ पे. बेसिकली contenir हमारा क्या होता है, कंटेन करना. हम जब सेक्शन बी में contenir को बहुत यूज करते हैं, हम बोलते हैं कि without knowing the fact of this content, that content you have contained, that is contenir. Continue. Is it clear to your team? हम उस पे काम करेंगे, but first of all we have to understand the vocab. So repeat after me, tanir. तनीर. Repeat after me, tanir. तनीर. Contenir. Ratnir. Conserve. Garde. Repeat after me, please. Repeat après moi. Tenir. Tanir. तनीर. Tanir. Détenir. तनीर. Contenir. Contenir. Retenir. Retenir. Conserver. Conserve. And garder. Guard. Is it clear to your team? Team, all of you, is it clear to you? वी मंसो. Pakka, sure. वी. Now repeat after me. सिनोनियम है. Yes. Clear. ओके. Clear. क्योंकि language में we are working for the phrases and synonym in the 7 days. Is it clear to you? Then only you can see, if you have something in your hand, then only you can make a paragraph in the lines. Tell me yes or no. Is it clear to you, team? All of you? Yes. Yes. Clear? Now, team, repeat after me. We have a vocab which is énoncé. एनॉन्थ्रे. Let me write it down. आपको एनोंसे को हम बोलते हैं आर्टिकुलेट योर स्पीच. हम बोलते हैं टीम आर्टिकुलेट योर स्पीच, एक्सप्रेस योर स्पीच. सो नाउ रिपीट आफ्टर मी. एनोंसे, प्रोनोंसे, आर्टिकुले, एक्सप्रीमे. टीम मेरे साथ बोलो लैंग्वेज को प्लीज. बोलो टीम. एनोंसे, Enonce. प्रोनोंसे, प्रोनॉन्से. articulate. आर्टिकुले. Enonce basically, whenever I'm in the state of saying something, the state of express something, enonce.
Énoncé. Pronounce. Pronounce. Articulate. 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 Exprime is to express. Exprime. Is it clear to you, team? Clear हो रहा है team आपको? All of you? Yes. तो ये लास्ट वाला रिपीट कर दो. Okay. Énonce. Énoncé. Whenever I'm in the state of expressing something. Pronounce. Pronounce. Articulate, to articulate your speech. Exprime, to express your point of view. Is it clear to you, team? Yes. All of you? Yes, sir. जब Yes. जैसे हम इंग्लिश में इस तरीके से भी बोलते हैं ना, आफ्टर डूइंग दिस माय वर्क विल बी कंप्लीट. After doing this, देखो उसमें क्या होगा वो ध्यान समझना. After doing this, team, listen very carefully. What is after? After. Après. After is after. Team, whenever we have this type of sentence, after eating this, after doing this, in that case, that's a rule. You have to make full verb of avoir. Clear? That's a rule. Now, for example, if you're saying after working there, I blah 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 blah, जो भी आप बोलो English में. After watching the television, blah 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 blah. But after doing something, maybe after eating a vegetable, after eating a food, I went to blah blah. So après avoir, do that's a rule. I have to make full verb of avoir and past pepe of my main verb. Doing is my verb for faire. Yes. Faire, pepe is fait. Après avoir fait, it means after doing. Now, for if you say after eating the food, so what is after? Après. Avoir. Après avoir. Manger. Manger. Yes, past tense. Pepe. Après avoir mangé. La nourriture. Nourriture, basically we have food. Nourriture. Is it clear to my team? Clear, all of you? Après avoir mangé la nourriture, is it clear to you? Repas. Repas, we have meal. Nourriture. Is it clear to you, team? Repas, nourriture. Is it clear to you, team? तो manger में e double e के साथ वो आएगा ना? Exactly. E के साथ agu आएगा ना? तब the sound है e agu. Clear? Yes. E के साथ, because I don't have symbol right now. So you can use e agu. I'm saying I said e agu, right? So after, because we have to use pepe of the verb. So pepe is e agu. Say class. Repeat after me. Alimentación. Repeat after me. Alimentación. Nourriture, repa, alimentación. Repeat after me. Repa, Repa. alimentación. Is it? Alimentación. Plat. This is your, now if I ask you, what is the food in French? You can say repas. Plat. Plat, I can say dish. Yes, plat. Nourriture. Nourriture and alimentation. Is Alimentación. it clear to my team? Clear? Now, Yes. for example, if I'm using one verb, which is, for example, I can use the verb of DEF, which is intervenir. Very important vocab. Repeat after me. Intervenir. Let me write it down. Repeat after me, team. Intervenir. So, intervenir is my verb to intervene. Very important vocab for your DEF. Intervene. Intervenir. And this vocab was in my section B oral. Repeat after me. Intervenir. Se brouiller. Repeat after me. Se brouiller. Brouiller. Repeat after me. Se brouiller. Se brouiller. Basically
we have used, you know, to, to to dispute, chillana, sabruye, fight, bagare. Repeat after me, sir, bagare. 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 Sir, bagare, basically we use a vocab of fight. Bruye, bruyard. Repeat after me, bruyard. So a bruye is my verb to, to shout, maybe, but bruyard. Now, bruyard, we have verb to fog. The weather is very fogging. Bruyard. Is it clear to my team? Clear, team? So, Yes. team, repeat after me. Sir, bagar. Bagar, basically, we have fight in French. Bagar. Is it clear to you? Repeat after me. Brouiller. Brouiller, we have, scramble. In English, scramble. Brouiller. Brouiller. Repeat after me, team. Sir, brouiller. Ab sir, brouiller, basically, we have fall out. Bagar. Bagare. Quarrel. The street quarrel, the fight, dispute. Is it clear to you, team? Yes, sir. To fall out. Sir, brouiller. But over here, if I use only brouiller, repeat after me, team. Brouiller. Repeat the verb, please. Brouiller. So basically, we use for, जब आप किससे संघर्ष करते हो, किसी का लेने का ना, scramble, to snatch, हाथापाई, something we call as sabrouiller. Is it clear to your team? Yes, sir. Is it clear to your team? Sabrouiller. Now repeat the language, please. Assimilate. Very important vocab. Assimilate. Repeat. Assimilate. Repeat after me, my team. Assimilate. Assimilate, basically, we use for assimilate. Repeat after me. अब ये assimilate जो है हमारा, it is very, very important pattern, and all this pattern we used in DELF team. Repeat after me. Assimilate. Assimilate is to assimilate karna, right? Is to assimilate. Okay. Now, if I ask you how I can go with a beautiful equation of assimilate, now repeat after me. Assimilate. Repeat after me, team. Assimilate. Égaliser. Repeat after me. Égaliser. Égaler. Repeat after me. Mettre en équation. Équation, basically. Équation, basically, equate. Mettre en équation. Mettre en équation or mettre sur le même pied. बिल्कुल ध्यान समझना, टीम. Assimilate is to assimilate. Égaliser is to equalize. In English we have equalize. Égaliser, equal, égal. Now, for example, if I will say you and me are on the same foot, मतलब हम equal हैं? Tell me yes and no. Yes. Yes. So what to say in French? Team, ये बहुत important things हैं. आपके पास अगर ये बहुत beautiful, पैटर्न है. जब आपको कोई टॉपिक आता है ना, देन यू विल वर्क फॉर योर वोकैब, राइट. अब मैं एक टॉपिक दूंगा, आपको सर्च करना है कि आपके पास ऑलरेडी 40-50 वोकैब्स हैं. अच्छा, अभी टोटल हाउ मेनी वोकैब वी हैव? टेल मी. काउंट द वोकैब प्लीज. हाउ मेनी वोकैब वी हैव इन टोटल? तो कल और आज की मिला के अराउंड 80 हो गई होंगी. 80. बल्कि ज्यादा ही होंगी. 100. Put on the same footing. Arguments लगाने के लिए हरप्रीत मैम, it's very important vocabularies. Assimilate. Égaliser. Repeat after me. Égaliser. Égaler. Mettre en équation. Mettre sur le même pied. It means put on the same footing. Mettre en équation is equate. Equate, equal, equalize. For example, if I will give you one topic for equality,
Inequality, basically, if I will give it to you, inégalité, inequality. Is it clear to you? Equality पे आपको कुछ लिखना नहीं है. Inégalité पे it is just you have, see आपका टास्क क्या होगा अभी. Listen to me your task first, because first we have to go for the जैसे आप करते हो पहले अपने आप को वार्म अप करते हो आप, तो अभी मैं आपको वार्म अप सिखा रहा हूँ कि हाउ यू कैन ग्रैब योर पैटर्न. Inégalité पे you have to think forward. Almost we have 90-95 vocabularies which I observe, right? Now जो हमने day 1 किया है, अभी हमने yesterday जो हमने टॉपिक किए थे, हमने to how to create a sense of the language. Have you done how to create the synonym, right? अभी शायद मैंने अलग बैचेस में वो नहीं किया, 8:30 PM वाले मैंने बैच में उसको किया हुआ है. क्लियर? सो शिवी, हैव यू डन विद दिस? तो जो अदर टीममेट्स हैं, जैसे जो मॉर्निंग सेशन के जो अभी आए हैं मेरे साथ यहाँ पे, तो आपको मैं सेशन ऑलरेडी भेज चुका, शायद आई विल सेंड इट यू अगेन, वो सेशन, राइट? यू हैव टू वॉच द सेशन एंड ये वाला सेशन भी. उसके यहाँ पे आपको इनेगालिटी पे यू हैव टू क्रिएट, आप इस इन वोकैब कैसे यूज कर सकते हो, और आपको मैं से बात करने की हाउ वी कैन यूज इन. नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव अ टॉपिक ऑफ इनेगालिटी, राइट? सो एवरी जो आपने सी व्हाटएवर वर्ब्स, व्हाटएवर synonym, whatever vocab you have written in the yesterday session and the today session, okay, énoncer, exprimer, I want to express the inégalité. For example, if I will say I'm in the state to express my topic of inequality, what to say, how to say in French? I'm in the state, it means énoncer verb use होगा. अभी बस use करना है आपको, ऐसे ही बताना है. énoncer use होगा. In order to express something, exprimer होगा. Tell me team, yes and no. Yes, sir. Articulate लगा सकते हो. Tell me yes and no. Yes, sir. Tell me yes and no. Yes, sir. इस वजह से ना आपको I want to intervene. I want to intervene in this problem. प्रॉब्लम को मैं कुछ अंदर कुछ कहना चाहता हूँ. Intervene, intervenir. Say clear. Now repeat after me. Combattre. Team बोलो. Combattre. Combat. Combattre is what? Fight. Fight. But fight क्या ये हाथ up? No. No, to fight against pollution problems. Yes. Is it clear to you, my team? Combattre. Repeat after me. Combattre. अब combattre का synonym क्या होगा? Oppose. Repeat after me. Oppose. Is it clear to you, team? All of you. Yes, sir. Oppose. Combattre. Clear? Okay. So now, team, did you understand the concept today? What Yes, we sir. have done? Sir, not fully, but a bit of. A bit. Because आपके लिए अभी नया है ना हरविंदर, क्योंकि आप 8:30 में ना, Yes, मैं sir. Yes, sir, yes, 8:30 sir. में बैच को ऑलरेडी वो चीज मैं करवा रहा हूँ. बट अभी आप Okay. मॉर्निंग सेशन से आया, तो ऑब्वियसली मॉर्निंग में हमारा तो सेम सी मॉर्निंग में जो टीम है उसका सेम सेशन ही चलेगा जिसमें हमने खत्म किया था. आपका सेशन आज मिस ना हो, इसलिए वी शिफ्टेड इन 8:30. आपको कुछ नए सीखने को मिला होगा आज हरविंदर, Yes, sir, yes, sir. That is not an issue. It's okay. राइट? अभी इज देयर. अंकित, मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा. हाँ, टाइम तो जीवे लगेगा ना, बिकॉज अभी नया लैंग्वेज है. बट कुछ समझ आया आपको चीजों का कि हम किस पैटर्न में पढ़ रहे हैं? Yes, sir. देखो लैंग्वेज में क्या है बेसिकली. अच्छा अगर फॉर एग्जांपल जीव्या, कि अगर हम इस सेशन को 2-3 बार रिपीट करें, यू अंडरस्टैंड समथिंग, Obviously. Yes, right? sir. So for this reason we have an entire session in the YouTube. जैसे अभी ये भी हमारा रिकॉर्ड होगा और YouTube पे चला जाएगा. प्रीवियस सेशन जो मैंने आपके साथ किया yesterday को, वो भी YouTube पे है. तो उनको आप एक बार 3-3 4 बार ना उसको सुनो, आप समझो, आप then come back with your questions. Clear? Is it clear to you? Because this is the way wherein you can achieve your target.
Is it clear to you? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हम कैसे क्या कर रहे हैं, जैसे वी हैव डन वर्ब्स, अब वर्ब से आगे क्या होगा, आप आईएलटीएस करते हो क्या करते हो, तो सेंटेंस में यूज करना, फ्रेजेस, है ना, फिर बोलना, स्पीकिंग, राइट. सो बिफोर गोइंग अ पैटर्न ऑफ ऑल दिस पैटर्न्स, सो सबसे पहले हम ये एक 400 to 500 वोकैब अपने माइंड में रखना चाहते हैं, सो दैट कि हम जब जाएं अपने उस पैटर्न पे तो एटलीस्ट 500 TEF की वोकैब मेरे पास हो. इज इट क्लियर टू यू, सोनाक्षी? Yes, sir. क्लियर. सो आई होप सभी को सेशन समझ आया होगा आज का. टीम Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? हरप्रीत मैम समझ आया आपको? यस सर. क्लियर. तो अभी हम ये टीम अभी थोड़ी पीछे है, बट 8:30 वाला सेशन इसलिए किया कि चलो आपका मिसिंग नहीं चाहता था, मैं कुछ नया देना चाहता था. ठीक है, बाकी मॉर्निंग में जो हम इस पैटर्न में चल रहे हैं, जैसे वी हैव टू स्पीक, we are discuss for a lot of the articles and all these things which we are doing, the pandemic all these things अभी जो डिस्कस करना है मैंने आपके साथ. ठीक है, तो चलेगा आपका मॉर्निंग सेशन के साथ. ठीक है, सो टीम विशिंग यू हैप्पी दिवाली. सो जैसे कल हमारा छोटी दिवाली है, बड़ा दिवाली है, तो विल बी ऑफ फॉर व्हाट आई वुड से tomorrow, day after. So we'll meet on Monday now. Clear? ओके. Okay, sir. Clear? Because I'm in my hometown, so what I would say, because Wednesday, Thursday, then Friday again, it's Friday, Thursday night, late night तक ही spend होगा, Friday early morning तक. So Friday would be hard to wake up in the morning and to take the session. So directly we'll meet on Monday. Clear? Meanwhile कुछ session आपको मैं भेजता रहूँगा, session practice करते रहना. Okay? Okay, sir. ओके सर. Yes, sir. Sir, I sent you 2 sessions. Have you checked that or it is pending till? हरविंदर, हरविंदर बोल रहे हैं ना? Yes, yes, sir, yes, sir. Yes, I already checked. कुछ slightly mistakes हैं, but yes, it was good. Pronunciation जो आपने भेजी, it is all good. Clear? but मैं उसको कुछ लिख नहीं पाया था आपका feedback, but I already have, जो भी आप भेजो मैं चेक करता हूँ उसको मैं. Okay, नहीं सर, मतलब मेरे को मैं ये पूछना चाहती थी कि इसमें वो जो मिस्टेक्स हैं कुछ है, तो बस मेरे को वही पूछना था. हाँ, अदरवाइज वो मिस्टेक्स जो हम सेशन करेंगे ना अपने साथ में डिस्कस करूंगा मिस्टेक्स. ठीक है? ओके सर, यू विल सेंड होमवर्क टू अस इन बिटवीन, मतलब हाँ in बिल्कुल, between? मैं वही कह रहा हूँ ना, सेशंस Okay. आएंगे, उन सेशन को आपको लिख लिख के मुझे भेजना. ओके Okay. सर, ओके Okay, ओके sir. सर, ओके सर. ठीक है. So wishing you happy and safe Diwali team. Same to you, sir. हैप्पी दिवाली. Happy Okay. Diwali, sir. Okay, take care, bye bye. Bye. Okay.